Just a second. All right. So, okay. So we'll be starting with our Smash Mains program from tomorrow. So basically, this is the day 0 lecture of the Smash PYQ daily answer writing. Tomorrow onwards, we'll be having the 1 hour lecture every day where I will be discussing the answers of the previous year questions. But before that, there are two more things that you need to understand. The first and fundamental thing that you need to understand, or the approach that you need to build, is with respect to the reading. Okay. So as far as your reading material is concerned, X factor is going to be your prime source or the single source for all the subjects. You don't need to read anything beyond the X factor. Okay. So that first part is clear. The only thing I'm taking this live is to highlight how you have to read the X factor, or in general also what should be your approach for reading the mains related content. Okay. So in simple terms, अगर मैं कहूँ तो you need to study, or you need to read, or you need to build your content through strictly exam oriented approach. Okay. So exam oriented approach as in the every word or the every sentence that you are reading, subconsciously into your mind you need to think where I can use this into my answer. तो जो भी आप यहाँ से पढ़ रहे हो, जो भी आप यहाँ से देख रहे हो, जो भी आप यहाँ से फील कर रहे हो, always think कि where I can use this into my answers. That is what I call it the exam oriented approach. So passive learning आपको नहीं करनी है. So if you want to have your answers organic like the toppers, you need to give the commonsensical points, and those points can come only when you adopt the exam oriented approach. ठीक है. तो exam oriented approach basically करना कैसे होता है? So first and foremost, to do the exam oriented approach is to have the PYQs. So every chapter that is there into the X factor, at the beginning you will be having the PYQs. ठीक है. So suppose आप federalism पढ़ रहे हो, तो while reading the federalism, give first 15 minutes to the PYQs only. ठीक है. Once you give this 15 minutes to the PYQs, just think what UPSC has asked. Based upon that, you prepare your own questions. Okay, so UPSC can rephrase and ask similar question on the different lines. Or the second way is, if you know any of the current affairs related to that similar theme, you immediately think, okay, UPSC can ask on this theme which is similar to this in this year. Okay, so for example, these are the questions on the federalism. So last year, what they had asked is the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after Jammu and Kashmir Reorganization Act. Describe powers and functions of the Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir. तो basically उन्होंने क्या पूछा है? एक Jammu Kashmir Legislative Assembly, and second with respect to the powers and functions of Union Territory of Jammu and Kashmir. Okay, so this is the question. Now first you revise your static. What are the powers and functions of Union Territories of Legislative Assemblies of Union Territories, right? Apart from this, there are other Union Territories which were in use. एक आपका हो गया दिल्ली, ठीक है, which was not much in news, और उसके ऊपर already 2018 पे क्वेश्चन आ गया है. The second Union Territory which was in news majorly was Ladakh. So there were
huge protest that were going on in Ladakh for the demand of the 6th schedule status and full statehood, right? तो अगर जम्मू एंड कश्मीर पे पूछा है तो दिस ईयर दे कैन आस्क यू ऑन लद्दाख. पहले ये सोचो. Similarly, evolving pattern of center state financial relations in context of planned development in India. How have the recent reforms impacted fiscal federalism? यहां से आपको समझ आया कि क्वेश्चन इज ऑन द फिस्कल फेडरलिज्म. ठीक है. सो रिसेंट रिफॉर्म्स दे हैव आस्क्ड, बट दे हैव आस्क्ड इन 2025. सो विद इन फिस्कल फेडरलिज्म व्हाट चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड? 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आया है. देयर वाज द डिमांड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम साउथ बेसिकली टू डिमांड द ग्रेटर शेयर फ्रॉम द सेंट्रल रेवेन्यू. ठीक है. सो यू कैन think, okay, so this year I can get the question on 16th फाइनेंस कमीशन on similar lines. ऑलरेडी उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन पे पूछा है. सो 16th फाइनेंस कमीशन पे पूछने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ते हैं, राइट? सिमिलरली they have asked you with respect to fiscal federalism, what are the other dimensions of federalism? Apart from fiscal, you have administrative federalism, you have legislative federalism. So within administrative federalism, what question they can ask? So already they have asked with respect to the Central Bureau of Investigation. But even at present, there were news with respect to the misuse of central agencies against state government. So you can expect, identify the theme key you can get this year with respect to the central agencies. Second, with respect to the legislative relations, you can think of कि okay, I can expect a question on 7th schedule, whether it should be revised or not. ठीक है. Then next, this is on the GST Amendment Act and to what extent it reflect accommodative spirit of fiscal federalism. ठीक है. Again, last year में अगर आप देखोगे, there was the news of GST rationalization. ठीक है. तो उस पे they can ask the question. So basically federalism से लिंक करना है तो they will ask कि the impact of GST rationalization on federalism. Or within fiscal federalism, the simultaneous news was with respect to the, apart from GST, the central cess and surcharge. That is also one thing on which you can expect a question. So 14th Finance Commission का PYQ के basis पे you can think, okay, 16th Finance Commission पे आ सकता है. Then 2020 में आपका क्वेश्चन था cooperation, competition, confrontation has shaped federalism. Cite some recent example. So this was on the broader lines. This year you can think, okay, they can simply ask you with respect to cooperative federalism, competitive federalism, confrontational federalism. इन तीनों में से सिंगल एस्पेक्ट पे भी they can ask, right? Then constitution exhibit centralizing tendencies. Discuss from the perspective of Epidemic Diseases Act, Disaster Management Act and Farm Acts. So इसके बेसिस पे आपको समझ आ गया. They can ask you with respect to the center state relations और legislative relations. तो बस देखो कोई नया एक्ट आया है क्या which is impacting the powers of the state governments. So you need to cover that act also. Next, the distribution of legislative powers. This we have already discussed. Then this is with respect to governor and elected government of Delhi. Again, union territory related question. Okay, so first give around 10 minutes. Think. ठीक है. खुद से सोचो कि ओके यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है तो व्हाट एल्स यूपीएससी कैन आस्क. ठीक है. देयर आर हाई चांसेस कि आपने जो सोचा है उसी में किसी एक थीम पे दे विल आस्क द क्वेश्चन. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड,
यही आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, दीज थीम्स। ठीक है, जब आपने क्वेश्चन ऑलरेडी बना लिया है ऑन अ रफ साइड की ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हेन यू विल बी रीडिंग द कंटेंट, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यू विल कंस्ट्रक्ट द आंसर कि ओके दिस पॉइंट आई विल राइट देयर. That is what is called as the exam oriented approach, because the exam demands you to write the answers. तो while reading itself you have to think about writing. ठीक है, सो जब पढ़ रहे हो तभी इमेजिन करो कि मेरा पॉइंट ये ऐसे जाएगा वहां पे. ठीक है, दिस ग्राफ में ये ग्राफ मेरा यहाँ पे जाएगा. और इफ यू हैव द कंपाइलेशन ऑफ 2 to 3 डेटास, दिस आई विल ऐड एज अ फैक्ट फाइल. ठीक है, so this is the very first step. So whenever on daily basis you will be reading any topic, give first 10 to 15 minutes to analyze the PYQs. इसी से करो. ठीक है, पहले सोचो. Again, I will also be giving the analysis part in our lecture, but I want you to do that as well. ठीक है, जब आप ये सोचोगे तभी whatever content you will be reading, you will be able to retain more. And वो आप पढ़ते पढ़ते you will be imagining how you are going to use those points or content, or you will be imagining your answer. ठीक है, that. Now coming to the content of all these aspects, including the recent context, I have covered in the X factor notes. ठीक है, now simply for example the first part where I have given the scholarly views on Indian federalism. तो बेसिकली यहाँ पे आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ द स्कॉलर नेम्स. तो इतने सारे मेरे को देने की क्या जरूरत है, बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. इंट्रोडक्शन के बियॉन्ड तो आप यूज हार्डली करोगे, एक आध पॉइंट में आप करोगे. तो इतने मैंने क्यों दिए, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सो जब आप पहला पढ़ोगे केसी वेयर डिस्क्राइब इंडियन फेडरलिज्म एज क्वासी फेडरल वेयर there is a strong centralizing tendency. तो ऑटोमेटिकली जब आप इसको पढ़ के आप सोचोगे कि ओके इफ द क्वेश्चन इज ऑन कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन, ठीक है, या फिर इफ क्वेश्चन इज ऑन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज. ठीक है, सो अगर ऐसा क्वेश्चन आया विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, माय इंट्रोडक्शन विल इन्वॉल्व केसी वेयर कोट. ठीक है, तो यहां आपका ये हो गया. नेक्स्ट सेकंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, जैसे जीएसटी एक्ट था. सो टू व्हाट एक्सटेंट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट reflect the spirit of accommodative federalism. So accommodative federalism is nothing but cooperative federalism. Immediately after reading this, you will understand, okay, cooperative federalism पे क्वेश्चन आ गया, I will use Granville Austin. ठीक है, third, if they are asking you about the significance of Indian federalism. So significance, sui generis model means Indian model is unique in itself. So if the question that they frame in that way, ठीक है, या फिर 25 वाला ही अगर क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. ठीक है, तो वहां पे भी यू कैन यूज द डीडी बसु कोट. इंडियन फेडरलिज्म इज द सुई जेनरिक्स ब्रैकेट में यूनिक मॉडल. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द फिस्कल फेडरलिज्म डोमेन. ठीक है, उसके बाद अगर सपोज इफ द क्वेश्चन आस्क यू ऑन ऑल 3 एस्पेक्ट्स, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्रंटेशन, या फिर ओवरऑल फेडरलिज्म पे पूछा, ठीक है, सो इंडियन फेडरलिज्म, या यू कैन यूज राजीव वर्मा कोट, मल्टी लेयर्ड फेडरलिज्म. दैट कैन बी योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू थिंक. Don't just passively read, okay, these are the scholar commentaries, I will be just reading it. ठीक है, या फिर रोट लर्निंग मत करो, रट्टा मत लगा. जो भी पॉइंट पढ़ रहे हो सोचो इन व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आई कैन ऐड दैट और वेयर आई शुड ऐड दैट. ठीक है, जस्ट इमेजिन द इंट्रोडक्शन इनटू योर एक्चुअल आंसर.
तभी जाके वहां पे यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, अदरवाइज नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू थिंक और रिकॉल. ठीक है, दिस देन comes the key features of federalism. Now if the question is not on directly on key features, but अगर question 15 marks का है, ठीक है, so where you can use this, कि after the introduction you can simply use a flow chart कि features of Indian federalism, और इसमें ये elaboration देने की जरूरत नहीं है, you can simply use features of Indian federalism, और यही बस सबहेडिंग यू कैन राइट इफ द क्वेश्चन इज ऑन 15 मार्कर. ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव टू इलैबोरेट. इन्हीं में से 5 to 6 पॉइंट्स ओनली सबहेडिंग्स यू कैन ऐड, दैट विल एक्ट एज अ कॉन्टेक्स्ट. तो ये सोचो वेयर आई कैन यूटिलाइज दिस पार्ट. ठीक है, देन नेक्स्ट इज, अब these are the unitary features. Then comes the significance. The next learning that you need to do is कि wherever possible, कि जहाँ पे भी possible है, try to go for the classification based approach for your dimensions. ठीक है, simply अगर वहाँ पे हमने 10 पॉइंट दिए हैं तो don't go for all the 10 points. ठीक है, उसका रट्टा मत लगाओ. ट्राई टू गो फॉर द क्लासिफिकेशन बेस्ड. तो जैसे सपोज इफ दे आस्क यू सिग्निफिकेंस ऑफ द फेडरलिज्म, तो अगर आपने ये क्लासिफिकेशन याद नहीं रखा, यू विल हैव टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स दिस. ठीक है, और उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे. बट इफ यू रिमेंबर दिस क्लासिफिकेशन, ऑटोमेटिकली आपको अब 2 पॉइंट्स तो उसमें से याद आएंगे ही आएंगे. ठीक है, सो ऑलवेज वन इज आपके लक्ष्मीकांत में ही अगर आप देखोगे तो फेडरलिज्म इज क्लासिफाइड अंडर लेजिस्लेटिव डोमेन, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन एंड फाइनेंशियल डोमेन. 3, तो दैट वन क्लासिफिकेशन इज देयर. ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? सो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल. उसके नीचे यू कैन क्लासिफाई. और सिग्निफिकेंस अगर पूछा तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कि रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रोवाइड्स फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, एडेप्टेबिलिटी टू रीजनल एस्पिरेशंस, एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना. ठीक है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल, देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट. राज्यसभा एक्ट्स एज अ वॉइस ऑफ स्टेट एट द सेंट्रल लेवल. ठीक है, देन इंस्टीट्यूशंस लाइक जीएसटी काउंसिल. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, फिस्कल फेडरलिज्म पॉलिसी, प्रोवाइड स्कोप फॉर पॉलिसी इनोवेशंस. सोशल सिग्निफिकेंस, सोशल जस्टिस, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है, तो अगर इवन इफ यू जस्ट रिमेंबर दीज 4 पॉइंट्स, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक, सोशल, ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट्स आपको याद आएंगे. So the important point is whatever heading you are reading, always try to go for the classification. That will enhance your retention and that will also enhance the diversity of the points. Okay, next. Now comes this. So asymmetric federalism. Again, here also if you see key aspects में, we have one for classification, vertical, horizontal. ब्रैकेट में सिर्फ ये दिया, अगर इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन डिस्कस द असिमेट्रिक फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, यू हैव क्लियर कट क्लासिफिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इजीली यू कैन प्रोवाइड एटलीस्ट 3 पॉइंट ईच, एंड दैट क्लासिफिकेशन विल इटसेल्फ will enhance the presentation aspect of your answer. Okay, simply writing the points will give you the mechanical answers. जहाँ पे where you are able to eliminate provide this kind of the classification, that is always going to pay you rich dividends. And if you want the proof of that, check any answers of Shruti Sharma. Okay, check any answers of Ishita Kishore.
ठीक है, you will find same kind of the classifications. ठीक है, next. So apart from the classification part, this again issues, political, institutional, economic, social, same classification. Okay. The next aspect is wherever we have specifically mentioned global best practices or state level best practices or data or graph, wherever we have provided that, always think how you can enhance the visibility of it. ठीक है, अब ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में वे फॉरवर्ड में ही 6-7 पॉइंट कर सकता था. Why I have given this into the box is because these are going to add the X factor pointers. इन दोनों में से आपने कोई भी एक भी लिखा, that itself, that single point is going to give you 0.5 extra mark. ठीक है, that is why we have put it into the table. So जहां पे भी आपको ऐसे टेबल में दिखेगा, वहां पे बस याद रखना कि this is X factor pointer. ठीक है, और इसको आपको आंसर में इनकॉर्पोरेट करना ही है. And second thing, not just incorporation, you also have to ensure that the visibility of this point remains. So जैसे notes में हमने टेबल में इसलिए दिया है because आपको वो दिखे. There should be the visibility of it. Same thing you have to do it into your answer sheet. So suppose if this is your margin of the paper and you are giving way forward here you rather than giving these best practices as 0.6, 0.7, you make the table box here, a small box, and give global best practice as heading, and under it write 1 or 2. That will increase your presentation, that will increase your visibility of the key points. Okay, so that's second. Now the next part is again all the aspects we have covered, and that too with proper categorization. So cooperative federalism देखोगे, again rather than simply giving the points. So even if UPSC asks the question, UPSC will ask what constitutional provisions highlighting the cooperative federalism in India. Okay, so simply you can write the points, concurrent list, article 54, 80, whatever, but that won't fetch you marks. So under the heading itself, if you provide the subclassification, legislative provisions, executive or administrative provisions, fiscal provisions or institutional architecture, उसके नीचे बस दो भी लिख दिए तो भी आपके 8 पॉइंट हो जाएंगे with better presentation and better visibility and most importantly diversity of the points. Otherwise क्या होगा कि आपको बस political याद आएंगे, you will write only political ones. ठीक है, so the categorization and proper arrangement of the points is essential aspect. ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखोगे issues same, political, institutional, economic, social, and these are the examples. Again, specifically center state conflict, state specific we have given. तो ये हमने इसको highlight किया है. Why? Because you can put it into the box. So major center state conflicts or major conflicts in recent years, दो ही लिख दो, West Bengal, Tamil Nadu, that will suffice. But इन दोनों का visibility आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, right? This is how you have to cover the notes. ठीक है, so all the aspects, competitive cooperative federalism we discussed. This is with respect to competitive federalism. Now the one more theme on which we are expecting a question is competitive sub-federalism. So combining local bodies and combining federalism, they can ask competitive sub-federalism. So whenever you read this heading competitive sub-federalism, there itself you should think, okay, this can be asked as a part of local bodies also or federalism also. Competitive sub-federalism is basically where
your local bodies compete with each other. कि जैसे there is a competition between the states, ठीक है. सो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हो गया, या फिर स्वच्छ भारत मिशन रैंकिंग हो गई, या फिर ओपन डिफेमेशन केस रैंकिंग हो गई, या फिर आपकी क्लीन सिटीज रैंकिंग हो गई, या स्मार्ट सिटीज रैंकिंग हो गई, ठीक है. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म. तो ये पढ़ते ही आपको सोचना है दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ लोकल बॉडीज और फेडरलिज्म, ठीक है. देन यू कैन read the content about it and simultaneously you can imagine the answer. Then this is about the fiscal federalism. Okay, so in fiscal federalism also this year they have asked the changes made in fiscal provision. Okay, next year they can add what are the provisions of fiscal federalism. So again you should remember this classification: 7th schedule, revenue sharing mechanisms, institutional mechanisms of finance commission, then grants in aids and borrowing powers. Okay, then changes. Remember, you need to remember this graph. जितने भी graphs या फिर diagrams मैंने दिए हैं, all you need to remember. Now, this is 16 Finance Commission on which we are expecting a question, and also this is current affairs. Okay, so that's why we have put it into the box. So this is the most important one. And again, rather than giving the simple points, we have gone for classification. So the point that I want to make is while reading, okay, you read the content, you read the points, you try to remember or mug up the data or examples, but the non-negotiable part or the most significant part is the classification. You remember this classification, because this classification is not only going to increase your reading productivity, but it will also go, but it is also going to increase your answer writing quality. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है, इसी को याद रखना है. So it's completely fine even if you forget 1 or 2 points. It's completely fine अगर exact data याद नहीं है तो. It's not prelims, it's mains. So 20 का अगर आपने 22 लिख दिया, it won't make much of an difference. ठीक है, that's completely fine. Many a times even toppers fake the data. ठीक है, अगर आपको exact याद नहीं आ रहा है but approximate number पता है, you can write that data. That's completely fine. ठीक है, but the most important is the classification. So जब भी, even if you are making your notes, even if you are trying to recall the things, go for or try to remember this, the classification approach. ठीक है, this. Then major issues with respect to 16 Finance Commission and the scholar views. Again, scholar views I have given it into the box. That means ab imagine or you think of any of the answers that you have read of toppers or even the normal answers with respect to the federalism. Hardly you will find any of the scholar. जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, those who have crossed 125 in GS2 only, they will have the inclusion of the scholars. So here I am giving you the ready-made. Okay, and I have put it into the box. That means you need to add this. So now Upendra Bakshi warned against executive federalism. So that means basically it is, you can add this into the issues part. बस scholar लिखो, उनका view लिखो, just box the scholar. खत्म, your X factor is there into your answer. 0.5 extra. ठीक है, it's as simple as that. Everything is there, everything is consolidated in a crisp and precise manner. All you have to do is you need to understand where you have to focus, you need to remember those things, and you need to know how to use those things. ठीक है, आपको तीनों स्कॉलर और उनके व्यूज पता होके कोई फायदा नहीं है if you are not putting them into your answers. And secondly,
you are not ensuring the visibility of these X factors into your answers. Simply issues में if you are writing 6 issues और उसमें तीसरा या चौथा अपने स्कॉलर का व्यू लिखा, there is a very high chance that evaluator might miss it. ठीक है, so इसीलिए you have to write it either at the first point और end में लिखो, but box the scholar. This is how you are going to ensure the visibility of, or this is how you are going to utilize the X factor at its fullest. ठीक है, इससे बेटर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी. यू पिक एनी मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, इससे कंसाइज मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, इससे एक्यूरेट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे एनरिच्ड कंटेंट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा. ठीक है, दैट पार्ट वी हैव टेकन कवर ऑफ. We have given you the schedule as to how you have to cover this. Now I am telling you how you have to utilize this. Okay, so just make sure. So while reading itself, you have to ensure these things. Then major SC judgments on federalism. इतने SC judgments है और ये मैंने बॉक्स में डाला है. That means on any question on the federalism आपका एटलीस्ट एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आना ही चाहिए. ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस की स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूआर 1963 first case to define federal character and held that constitution is not truly federal but has a strong central bias for national integrity. तो जब यूनिटरी फीचर्स का question आएगा, so now think where you can utilize this. So wherever you have to highlight the unitary features of the constitution, okay, there you can use this judgment. Second, in SR Bommai, the Supreme Court called federalism as the basic structure of the constitution. So immediately you need to think, okay, I can use this in conclusion. A simple conclusion कि federalism is the basic structure of the constitution. Box में SR Bommai case, thus it needs to be protected, promoted and celebrated. कोई भी क्वेश्चन हो आपके फेडरलिज्म का, you can have this common conclusion. So my point is your answer needs to have articles, your answer need to have data, your answer need to have graph, your answer need to have scholar and your answer need to have SC judgment. अब इतना if you are putting into your single answer, ठीक है, there will be no scope to reduce your marks, rather you will get more marks than others. Getting average marks is very easy. Even if you write generic but relevant content, you will get average marks. Getting above average is also relatively easy, where you have to just focus upon the substantiation part. कि data लाओ, examples लाओ. But getting topper level marks need this X factor, need this comprehensiveness. Federalism के आंसर में आपके scholar, if possible quote, relevant data, graph and Supreme Court judgment. All this needs to be there. And that is why जब पढ़ते हुए ही आप सोचोगे तभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, एक्चुअल एग्जाम में नहीं. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज वे फॉरवर्ड. अगेन हम सबको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू द वे फॉरवर्ड वी हैव कमिटीज. सो सिंपल, कमिटी के रिकमेंडेशंस, कमिटी रिकमेंडेशंस इन फिजिकल फेडरलिज्म रोड मैप. एंड यहाँ पे इफ यू वांट, जो मैंने स्कॉलर व्यू दिए हैं वहां में से एक आप दे सकते हो. ठीक है, ये so यहाँ इसी को आप रिफ्रेश कर सकते हो. इफ यू हैव यूज्ड एनी ऑफ दीज टू इन इश्यूज, उपेंद्र बख्शी यू कैन यूज कि genuine consultation is ensuring genuine consultation through bodies like interstate council. बॉक्स करके लिखो उपेंद्र बख्शी. ठीक है, सो यू हैव स्कॉलर ऑल्सो इन योर वे फॉरवर्ड. ओवर नहीं करना है पूरे आंसर में. मैंने 3 स्कॉलर दिए तो तीनों भी इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा नहीं है. जस्ट 1 स्कॉलर इन 1 आंसर इज सफिशिएंट. फेडरलिज्म पे ऐसे भी एक क्वेश्चन आएगा.
One scholar is sufficient, one Supreme Court judgment is sufficient, 3 data points are sufficient, 3 to 4 examples are sufficient. कि मैंने इतना दिया है मतलब सब कुछ उसमें डालना है. सुप्रीम कोर्ट के मैंने 5 जजमेंट दिए तो पांचों डालने हैं, ऐसा नहीं है. वन इज सफिशिएंट. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, बट यू नीड टू नो हाउ टू पुट इट और वेयर टू पुट इट. और वो तभी आएगा जब रादर देन पैसिव लर्निंग यू डू दी एक्टिव लर्निंग. कि सोचो हाउ आई कैन यूटिलाइज दिस पॉइंट. एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, दिस इज हाउ यू डेवलप योर एनालिटिकल कैपेसिटी. दिस इज व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू इन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल. ठीक है, that this is with respect to the way forward. Again, office of governor was in news in recent years. Simply I have given the quote. You can start with the quote or you can start with the recent context also. कि governor, office of governor, why it is in news. ठीक है, जैसे for example कल ही, so in the today's newspaper itself the very headline is the Karnataka CM resigning. ठीक है, but if you read the news, he resigned yesterday, but day before the governor left this governor's home and he left for Mumbai. ठीक है, so गवर्नर को भी पता था कि रिजाइन करने वाला है, so as per his constitutional duty he should have been there into the state, but रिजाइन करने के एक दिन पहले वो मुंबई आ गए. ठीक है, सो दिस इज यू विल गेट इट इनटू द न्यूज, बट आप उसके ऊपर सोचोगे नहीं. तो सिंपली आपको सोचना है कि कहाँ आप वो पॉइंट यूज कर सकते हो इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर. ठीक है, सो द गवर्नर ऑफ कर्नाटका लिविंग द स्टेट one day before the resignation of the CM has sparked the debate over politicization of office of governor. If the question is on that lens, you can utilize that as the introduction, contextual introduction. Okay, so like I said, whatever news also that you will be reading, when I will come to the second part, I will tell you how you have to read the newspaper also. Okay, this is again powers classified under executive, legislative, financial, judicial. आपको बस यही याद रखने हैं 4. अपने आप आपको नीचे से 2 पॉइंट उसमें याद आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट द रिसेंट केस स्टडीज केरला एंड तमिलनाडु विथ रिस्पेक्ट टू इश्यूज. ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड रिकमेंडेशन सरकार या पंचायत. On these same lines you can get a question on interstate council or interstate water disputes. यहाँ पे भी you need to remember the map. अब आपको पता है कि interstate water dispute अगर आया तो you need to draw the map. So before, while reading this itself, don't just look into the map, practice it. ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए भी कल के सेशन में मैंने जो दिखाया था श्रुति शर्मा वगैरह का कि how they have drawn the map, practice in that way, तभी you will be able to execute. Otherwise, if you just look at the map here and after that if you don't practice, exam में you won't be able to do it on time. बहुत time जाएगा. I have given here, you practice it. ठीक है, thus then the border disputes, again same thing. I have given the map, practice it. Border dispute पे भी क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द 7th शेड्यूल. ठीक है, इमरजेंसीज में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल एंड नेशनल इमरजेंसी. सो बेसिकली एंड द लद्दाख वाला पॉइंट मैंने जो बोला था, सो दैट 6th शेड्यूल पार्ट आई हैव कवर्ड इट इनटू द लोकल बॉडीज, तो वो आपको वहां मिल जाएगा. तो माय पॉइंट इज X factor is more than sufficient as a source of content. It is comprehensive. We have thoroughly covered all the PYQs. We have thoroughly covered all the recent news. ठीक है, तो इसके beyond आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. Only thing that you need to do is you need to understand how you have to read. ठीक है, same thing goes with the newspaper.
while reading the newspaper also, don't do the factual reading. First, if it is about the editorial, read the heading of the editorial. You will understand ki what is the importance of it. Okay, automatically you link it with the micro theme. Prepare one question. Okay, they can ask you on these lines. Then you start reading. ठीक है, so that जो भी point आपको याद आ रहा है immediately you can imagine, okay, this is how I can make my point. ठीक है, so that level of the precision or that level of the exam oriented approach you need to bring in your studies. अगर आपको execution part आपका सही करना है तो, जैसे for example, if I have to give this, again this is with respect to the governance, the same philosophy, the entire PYQ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ई गवर्नेंस अगर हम ले, ठीक है, सो ई गवर्नेंस का नाउ दिस इज द क्वेश्चन इन दिस ईयर कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एंड बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन रादर देन यूजर सेंट्रिक डिजाइंस. ठीक है, उसका क्या आंसर है वगैरह, दैट डजंट मैटर. But this is the question. Basically, what is the statement saying? E-governance has built-in bias towards technology and backend integration rather than user-centric designs. मतलब that limits accessibility. So that is the issue in e-governance. So this year, if they ask you a question on the e-governance, what are the issues in e-governance in India? ये statement itself can be your one of the points in issues. All you need to do is add the example. Example, lack of vernacular languages or lack of access in vernacular languages. ठीक है, तो यही पॉइंट आपका इश्यू आएगा. ठीक है, दिस अब यहाँ पे भी all the similarly e-governance is not only about utilization of power of new technology but also about the importance of use value of information. तो use value of information क्या होता है कि e-governance से जो भी डेटा आपका आ रहा है, the reliability of that data, the accuracy of that data, that is important. ठीक है, so वही आपका वे फॉरवर्ड बन सकता है e-governance के हर क्वेश्चन में. Strengthening use value of information by ensuring integrated and accurate data. And उसका आपका एग्जाम्पल है PM गति शक्ति मास्टर प्लान, इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड डेटा का. ठीक है, सो दिस इज हाउ दैट लेवल ऑफ द एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यू नीड. इसी अगर क्वेश्चन भी पढ़ोगे, क्वेश्चन से ही आपके पॉइंट्स भी बन जाएंगे. ठीक है, इशू में आपको एक मिल गया, ये एक मिल गया. देन इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस इन ई गवर्नेंस ब्रॉड बाय गवर्नमेंट, या फिर व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ ई गवर्नेंस, ऐसे लाइन पे अगर क्वेश्चन होगा, दिस इटसेल्फ कैन बी योर इंट्रोडक्शन. The emergence of fourth industrial revolution has initiated e-governance as an integrated part of governance. ठीक है, सो आपका इंट्रोडक्शन भी बन सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेन बॉडी में पॉइंट्स भी बन सकते हैं. इट कैन बी योर वे फॉरवर्ड ऑल्सो, इट कैन बी योर कंक्लूजन ऑल्सो. ठीक है, तो जैसे this role of interactive service model. ठीक है, so strength interactive service model means क्या कि गवर्नमेंट एंड सिटीजन इंटरेक्शन. ठीक है, so strengthening the interactive service model of the governance is essential for realization of Viksit Bharat 2047 or the goal of digital India. It can be used as the conclusion also. This is how much PYQs are important. Okay, this is one more aspect. Even question itself, previous year question itself, when you are reading, think from this perspective.
कि इनको इन्हीं स्टेटमेंट को भी क्या मैं यूज कर सकता हूँ. सो नॉर्मली इन आवर FLT, in IR question, generally we ask the statement based questions, and we generally tell students कि okay, if the question comes on this same theme, the quote that I have asked the question on can itself be your introduction. ये भी आपको सोचना है. तो द सिंपल फंडा इज, जो भी आप पढ़ रहे हो, जस्ट रिमेंबर और जस्ट थिंक हाउ आई कैन यूज, एंड जस्ट इमेजिन यू राइटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट इनटू द आंसर शीट. फिर देखो आपकी आंसर राइटिंग इफेक्टिवनेस कितनी बढ़ती है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द न्यूज़पेपर, एंड दिस इज हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द टॉपर्स आंसर्स दैट आई विल शो. अब ये देखो, दिस वाज इन न्यूज इन 2023 कि जर्मन minister fascinated by first hand experience of UPI payment. So basically what was the news? Ki he was paying the for vegetables using the UPI. अब इसको पूरा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. You have found this news. Now see the answer of Aditya Srivastav. So this is the answer. दिस इज ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आपको पता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका यूपीआई आता है. तो इनोवेशन एंड कन्वीनियंस पब्लिक सर्विस, बेटर यूसेज ऑफ मोबाइल्स विथ यूपीआई फॉर इजी पेमेंट. एग्जाम्पल, जर्मन मिनिस्टर पेइंग फॉर वेजिटेबल्स वाया यूपीआई. ठीक है. दिस इज हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज इनटू द आंसर्स. ठीक है. अब इसके लिए आपको ये पूरा न्यूज पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. whenever he might have read it or not, or he would have simply seen the image of it. ठीक है. कहीं पे भी इमेज बस देखी होगी या फिर न्यूज़पेपर में बस इमेज देखी होगी, immediately you would have thought, okay, I can use this in either e-governance or digital public infrastructure or India's payment systems. ठीक है. तभी जाके उसके आंसर में ये रिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है. सिमिलर अब यही देखते हैं, हम आज का ही पेपर देखते हैं. विल सी टुडेस पेपर. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट न्यूज, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा था कि इसमें दिया था कि गवर्नर सी स्पेशल सेक्रेटरी, ही प्रोवाइडेड हिज रेजिग्नेशन टू स्पेशल सेक्रेटरी एज गहलोत द गवर्नर वॉज अवे इन इंदौर. ठीक है. वही आप यूज कर सकते हो. देन सिमिलरली अब यहाँ पे बाकी तो कोई यूजफुल नहीं है. सेकेंड, विल एक्सलरेट वर्क ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट. पॉलिटिकल हमें नहीं चाहिए. रेसिडेंट टर्न टू टैंकर्स जार्स एज वाटर क्राइसिस डीपन. दिस. ठीक है. सो दिल्ली कहाँ पे है? दिस इज न्यू दिल्ली. ठीक है. सो एनी क्वेश्चन ऑन द वाटर, बी इट ऑन GS1 और GS3, दोनों में यू कैन यूज दिस एज द एग्जाम्पल. ठीक है. कि द रिसेंट शॉर्टफॉल ऑफ 90 MGD इन दिल्ली NCR रीजन इन रिसेंट समर्स. इतना ही. इसके नीचे का पढ़ो भी मत. नॉट नेसेसरी. हियर इटसेल्फ यू गॉट द एग्जांपल और यू गॉट योर लेटेस्ट डेटा. So in X factor, wherever the water topic is, you simply add this as the example. खत्म. इसके नीचे का पढ़ने की भी जरूरत नहीं. ठीक है. सिमिलरली अगर देखोगे, if next news is cooling zones offer a very commuters a breather. Again, in disaster management, you can get a question on heat waves in India in recent years. So the in way forward, you can add this as the case study. So cooling zones set up by Delhi government, that can act as your example. नीचे का पढ़ो भी मत, doesn't matter. आपको एग्जाम्पल मिल गया बस है. ठीक है. आपका हीट वेव्स स्टैटिक पार्ट, उसका पूरा एनालिटिकल पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड इनटू द एक्स फैक्टर. नाउ यू जस्ट गॉट द एग्जांपल, कूलिंग जोन्स एस्टैब्लिश्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट.
दैट इज योर एग्जाम्पल. यही सोचो, यही ऐड करो, बस खत्म. उसके आगे आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है. देन this is again TMC political. We don't need this news. Mob lynching case, Odisha man held. What is the name of that? Lynching of GRP constable Soumya Ranjan Swain in Odisha. उसके नीचे आपको देखना भी नहीं है. You just got your example. तो mob lynching, you can add this example into the topic on the communalism. ठीक है. In society, you can add this in as the in the ethics also. ठीक है. गवर्नेंस में यू कैन यूज दैट एज द एग्जाम्पल. ठीक है. तो सिंपल, आपको क्या याद रखना है? बस लिंचिंग ऑफ जीआरपी कांस्टेबल सौम्या स्वेन इन ओडिशा. दैट्स इट. इसके नीचे का आपको देखने की भी जरूरत नहीं है. स्पेसिफिकली तो वो पूछेगा नहीं व्हाई दिस कांस्टेबल वाज लिंच्ड. क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आइदर ऑन कम्युनलिज्म और मॉब लिंचिंग पे भी नहीं आएगा, कम्युनलिज्म पे ही आएगा. यू जस्ट नीड द एग्जाम्पल. यू गॉट योर एग्जाम्पल. Don't even read the next part. That much is sufficient. ठीक है. Then this, as the BJP MLA accused of assaulting government official. So just check the name of the MLA or ruling Bharatiya Janata Party. Okay, so he was of the ruling government. So simply you got the example: politicization of bureaucracy or political pressure on the bureaucracy. So BJP, don't mention the party name. So ruling party MLA beating Naib Tahsildar in Chhattisgarh. Khatam, you got your example. ठीक है. Similarly, next. Political party related we don't need. Of this, human trafficking was in news. So these two news, both news are related to the human trafficking. You got your examples. Okay, human trafficking anyway is covered in our X factor. So this is your X factor. Human trafficking was a expected theme because recently Supreme Court has provided the guidelines on this. In fundamental rights, I have covered that. Equality. ठीक है. So when you will find the X factor, you will find that. So वहीं पे आपको बस ये वाली news as an example you need to add. Then political party related not needed. Here again not needed. Simply just see the headings and just check where you can add. Now for example, this, so contradictions within India's cow protection regime. There is a very less chance of questions on the cow protectionism. ठीक है. तो you can simply skip this entire editorial. But यहाँ पे अगर देखोगे तो will increasing the strength of SC solve the pendency problem. So recently the strength of the Supreme Court was increased by the amendment. So that becomes an important theme. ठीक है. अब यहाँ पे आपको arguments in favor, arguments against दोनों मिलेंगे. That means this particular article becomes very important. So you need to read this entire article and बस आपको सिर्फ चेक सोचना है कि किस टाइप का क्वेश्चन इस पे आएगा. So basically they will ask you a question कि whether to what extent increasing the strength of Supreme Court judgment can solve the pendency problem. Means you need to give arguments in favor, arguments against.
you collect your points. So जो भी इससे notes बनाओगे, you arrange that under those two headings. Okay, so this is how you need to approach your entire content. So not just the X factor notes. Okay, even the newspaper. So from the single day newspaper, I gave you around 5 to 6 examples. एक हमारा पूरा थीम कवर हो गया, बट वो थीम भी उसके नोट्स हमारे रैंडमली नहीं बने हैं, उसके नोट्स हमारे प्रॉपर फॉर्मेट में बने हैं जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट. ठीक है, सो दैट लेवल ऑफ द सोफिस्टिकेशन यू नीड टू ब्रिंग इनटू योर प्रिपरेशन. That level of the exam awareness you need to bring into your preparation. और जब आप PYQs को basis रखोगे आपके preparation का, and when you will think over the PYQs, ठीक है, rote learning won't give you mains marks. ठीक है, it's your analytical capacity that is going to give you marks. और analytical capacity तभी develop होती है when you think. So don't do the passive learning, do the active learning. ठीक है, is this clear? कि how you have to read the X factor notes, or how you have to approach the overall content. ठीक है, all right. So we will be starting with Smash PYQ daily plan from tomorrow. So tomorrow onwards, you are going to have this. So tomorrow in the evening we will have your first test from 7 to 8. After that 8 to 9 we will be having the paper discussion of those 7 questions. I will be showing you my own answers. I will be asking you to compare your answers with me. ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन 4 बार आ चुका है इससे पहले, तो सभी ने वो प्रिपेयर करके रखा है, बट the concept of constitutional morality was given by George Groth. ये किसी को नहीं पता होता है, and by simply mentioning his name you can increase your marks by 0.5. ठीक है, so scholar the box here, every point substantiated with examples. In conclusion, again one scholar. Okay, so writing answers is different from writing good answers. अब इसके बाद आप जितने भी आंसर्स लिखोगे, you will have George Groth into your answer, you will have Rajiv Bhargava in your answer. ठीक है, similarly यहाँ पे भी the question is on uniform civil code. Again, this is expected theme this year as well. 2015 they had the question, factor hindering implementation of uniform civil code. Everyone will start with definition of uniform civil code, will write the factors. So political factors, historical factors, social factors can be there. You can classify under it, 2 points each. But what will make your answer different is, apart from that classification, this fact file, where you know Uttarakhand has implemented uniform civil code in 2025. Assam banned polygamy, and recently, yesterday itself, I think, Assam implemented the uniform civil code. Okay, so these 2 recent news, you are just putting it into the box. And third, Supreme Court judgment, सरला मुद्गल. यहाँ पे जब ऐसे बॉक्स करके आप लिखोगे, इवेल्युएटर को ये वाला पार्ट पढ़ना ही है, he can't miss out on this. अब यही फैक्ट अगर आप आंसर में मेन बॉडी में कहीं और लिखोगे, इवेल्युएटर माइट मिस इट. यही आपका एक्स फैक्टर है. ठीक है, these are the things that we are going to learn from tomorrow. How to write the points, how to improve your presentation. So every answer that you will be writing, you will be having my own answer for comparison. ठीक है, is this clear? Yes. Now here also, with respect to the women also, we have concluded with the quote. Even 2026 judgment also we have added with respect to the gender justice. So along with updated content, you will get enriched content also, and I will show you how you can improve your answer writing.
ठीक है? All right. So we will start from tomorrow. First 2 lectures are free. So you can start following the schedule. X factors are already there on our website. You can download it. You can register yourself for free for first 2 lectures. You can follow the schedule for 2 lectures. You can watch first 2 lectures free. After that, you can decide whether you want to continue or not. Toppers copies, if you get time, you can read. Otherwise, micro theme wise, toppers based practice I will cover into the lectures. Okay, those are in my brain, and those toppers practices itself are incorporated into these answers. So explicitly, it's fine even if you want to read, but all the best practices I have already covered into my answers. So you will get to learn here itself. Okay? All right. So let's start tomorrow. All the best.